Good evening, dear students. Today we will do MCQs for iterative constructs in Java. Iterative constructs means related to iteration, that is loops chapter. So we will do the MCQs related to the loops chapter. Okay. So let us check the questions. These are our questions. Okay. So starting with the first one. Identify the entry controlled loop for while, do while, both A and B. So answer will be D, both A and B. For and while both are entry controlled. Entry controlled means the one which will execute only after checking the condition. Second one, identify the exit controlled loop. So that will be C, do while. It checks the condition while exiting the loop at the end of the loop. Third one, identify the loop which runs at least once even if the condition is false. मीन्स कंडीशन फॉल्स रहेगा तो भी एक बार रन कर जाएगा, दूसरा बार से रन नहीं करेगा, नॉट फॉर सेकेंड टाइम. सो दैट विल बी सी अगेन, डू व्हाइल लूप. देन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनाइट लूप. कौन सा इन्फिनाइट लूप है? व्हाट इज एन इन्फिनाइट लूप चिल्ड्रन? द लूप विच नेवर स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग. तो सी, a equals to 1 less than equals to 5, a minus minus. This is an infinite loop. Why? Because a is decreasing. It will never reach 5. It will never become 6. So it will never become false. A equal to 1 semicolon semicolon a plus plus. This is also infinite because no condition is there. So no condition, no checking. So the loop will never become false. Now for semicolon semicolon, nothing is there, only semicolon is there. No initial, no condition, no step value. So this is also infinite. So our answer will be D, all of these. Next, identify the correct jump statement. Break default class import. So which is a jump statement? Break. A होगा answer. Number 6, assertion. Do while is an exit control loop. Correct है iteration? Sorry, assertion correct है. Reasoning, because it checks the condition while exiting the loop. Reasoning is also correct. So answer option A will be the correct answer. Assertion and reasoning both are correct and reason is the correct explanation. Then number 7, assertion. Continue statement skips the lines written below it and continues with the next iteration. Okay, it skips the lines written below it and continues with the next iteration. So it is correct. That is the definition of continue statement. Reasoning, because it is opposite of break statement and unlike break it does not terminate the loop. So reason is also correct. Like break, it does not terminate the loop. It skips the lines and continues with the next iteration of the loop. So A is the correct answer. Assertion and reasoning both are correct and reason is the correct explanation. Number 8, case study. Do while loop is an entry controlled loop. Do while loop is an entry controlled variable iteration loop which executes at least once even if the condition is false. Okay. Read the paragraph given and choose the wrong statement. It checks the condition before entering the body. Okay. Enter करने के पहले condition को check कर लेता है. Wrong. It checks the condition while exiting the body. It is a variable iteration loop. It runs at least once even if the condition is false. Okay. It runs at least once even if the condition is false. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट? चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? इट चेक्स द कंडीशन बिफोर एंटरिंग द बॉडी. ओके, एंटर करने के पहले कंडीशन चेक करता है, दैट इज रॉन्ग. एंड वन टाइपिंग मिस्टेक इज हियर. इन केस स्टडी आई हैव रिटन डू व्हाइल इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. सो इट इज नॉट एंट्री कंट्रोल, इट इज एग्जिट कंट्रोल. आई एम करेक्टिंग इट नाउ इटसेल्फ.
Next, number 9. Again, there is a case study question. Loop is a section of codes which can execute repeatedly depending on the Boolean condition given. It is used for such programs where we want to repeat the steps multiple times by writing only once. तो सही है, लूप ऐसे ही रन करता है, बुलियन कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जब तक बुलियन कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक लूप रन करेगा. ठीक है. और लूप के अंदर वैसा ही स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है जिसको बार बार एग्जीक्यूट कराना हो. तो रीड द पैराग्राफ गिवन एंड चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज़ अ कंडीशनल आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट. तो ये ट्रू है, ये रॉन्ग नहीं है. कंडीशनल तो है ही क्योंकि कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है. Iterative construct means such a construct which is running many times. It is used to execute the steps written within it multiple times. ये भी ट्रू है, मल्टीपल टाइम्स तो अपना बॉडी को रन करता ही है. इट कैन एग्जीक्यूट इट्स बॉडी ओनली वंस. ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. Okay, only once, that is not possible. It may be once also. Suppose I have written such condition that the loop will run one time only. So maybe once it is possible, but only once is not possible. And last one, it provides reusability in program. This is also true. Reusability कैसे प्रोवाइड करेगा? जैसे हम लॉजिक को एक बार लिखे लूप के अंदर, लेकिन रन करा रहे हैं 5 बार, 10 बार, 20 बार, सो रीयूजेबल हो गया ना. सो इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी, एंड रीयूजेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. देन नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डू व्हाइल लूप. तो सी द स्ट्रक्चर. डू body int a equals to 10 system.out.println while a less than or equals to 10 semicolon. तो करेक्ट तो यही लग रहा है बिकॉज सेमिकोलन इज ऑल्सो देयर. केसेज आर ऑल्सो करेक्ट. स्मॉल लेटर्स एवरीवेयर. लिविंग सिस्टम. सेकेंड वन, डू int a equals to 10 system.out.println a closed while a less than or equals to 10. ये भी करेक्ट है. ब्रैकेट के बगल में लिखने से चाहे नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. बी भी करेक्ट है. सी, डू ए इक्वल टू 10 प्रिंट ए वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 10. ये फॉल्स है बिकॉज सेमीकोलन इज मिसिंग. द आंसर विल बी डी. बोथ ए एंड बी बोथ आर ट्रू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Thank you children. Please keep on watching the MCQs. Okay, as I am uploading in that sequence only, you keep on watching. Don't wait for the last moment, otherwise you will not be able to cover up. You will not be able to remember anything at all. So take my instructions seriously, and whatever videos I am uploading now, MCQs, then I will upload programs and other questions, finding outputs. All are very, very important for the upcoming exams. Okay, all are important. Upcoming board exam, all the videos are important. And whatever doubts you have, you keep on asking. Okay, thank you.